in a sense that there's no force felt, and it's just equalized force. So let's hope in the next 4 months, when at the L1, as the satellite is placed, it's going to face the sun all the time, 24/7, and all through the year. So Indian astronomers are going to benefit from it because it's a high technology instrumentation that has gone in, and it's very up-to-date electronics. So we are also aiming at regions to observe from this point, regions very close to the sun's surface, and the solar corona is the main sort of object of our interest. Sir, is there any challenges for? Sir, is there any difficulty or challenging situations, sir, today? I don't see at the moment, because PSLV rocket is a trusted workhorse of ISRO, and it's going to be first placed in the earthbound orbit. Then there will be several Earth orbit raisings, after which it will be placed in a cruise orbit, and then eventually it has to land at L1, where ISRO is going to do quite a lot of maneuver in such a way that it follows, it enters that point and adopts a halo orbit and around that point. And it is going to face all the time. The solar panels are going to face the sun all the time, so that energy is available and instruments can work. So I want to ask one more time. So why L1? Why particular L1 point? One thing is that near the Earth we have many more difficulties, and continuous monitoring of the sun is very essential, because L1 moves around the sun as the Earth moves around the sun. It's the same angular velocity, and therefore all the time the sun is available, and there are no eclipses caused by the moon, and obviously that point also is of interest because we are virtually outside the magnetosphere of the Earth, so we can understand the intricacies of interplanetary medium. Thank you, sir. भारत इसरो के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्या बोलते हैं सर इसके बारे में? एकदम सही बात है, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो PSLV रॉकेट पर एक विशेष सैटेलाइट लगाया गया है, जिसको कि इसको लॉन्च किया जाना है. इसका नाम है Aditya-L1. आदित्य यानी कि सूर्य का अध्ययन है. L1 अर्थात एक ऐसा बिंदु सूर्य और पृथ्वी के बीच में जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाता है, और वहां हम इस सैटेलाइट को रखना चाहते हैं. और ये जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये भी उसी हिसाब से सूर्य के चारों ओर घूमेगा, और लेकिन हर समय ये सूर्य को देखता रहेगा. एक किस्म से आप इसे कहिए, ये सूर्यमुखी सैटेलाइट है, और इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं जो सूर्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए हैं. उनमें से जो प्रमुख है वो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, जो कि इसका सबसे बाहरी बहुत ही गर्म वातावरण है, जिसको आमतौर से हम नहीं देख सकते हैं, और केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही हम देखा करते थे. इसमें जो सोलर कोरोना ग्राफ लगा है वो सूर्य की जो बिंब है उस चमकती डिस्क को एकदम ढक लेगा, ताकि हम जैसे ही इंटेंसिटी ड्रॉप होगा तो हम सूर्य का बाहरी वातावरण जो है कोरोना, उसका ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं. ये अत्याधुनिक उपकरण इसमें हैं, यानी कि पहले और इतनी अप टू डेट इलेक्ट्रॉनिक्स है, और जाहिर है कि भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन डेटा सेट मिलने जा रहा है. इसमें 7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करने के लिहाज से हैं. सर, इसका लाइफ टाइम क्या होगा और इससे क्या क्या प्रॉफिट होगा? साथ में साथ कोई ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन है सर आज हमको? देखिए, एक तो भारतीय वैज्ञानिकों के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जहाँ तक चैलेंज की बात है तो जब L1 पॉइंट पर जाना है तो वो अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि इतनी दूर है, ये लगभग 4 गुना है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी से. दूसरी बात यह है कि सब इंस्ट्रूमेंट्स को फंक्शन करना है, और अगर बेनिफिट का लिहाज देखें तो एक तो साइंटिफिक बेनिफिट है, और उसको हम पैसों में नहीं आंक सकते हैं. लेकिन ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं इनके प्रति जनता की रुचि बढ़ती है,
और जनता समझती है कि हाँ हमारे भारतीय वैज्ञानिक कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा एक यंग जनरेशन के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, तो उसके तो मूल्य को हम नहीं आंक सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है जब भी कोई ऐसी लॉन्च होती है या ऐसा कोई प्रोग्राम इसरो की तरफ से या भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से सामने आता है। என்ன தாத்திட்டு இருக்கிறாரு அவரு? நேத்தே வந்தீங்க? நேத்தே லைவ் அவன் என்னன்னு கேளு. கூப்பிட்டான். வண்டி வருது 7 வரஸ்பீடு பாருங்க. I keep come actually. Whenever something big happens, Chennai, I do. I'm a Tamilian. राजेंद्र जी, उसका टेम्परेचर का एक शॉट जरूर लेना. वो ह्यूमिडिटी और जो टेम्परेचर दिखा रहा है ना, उससे पता चला विंड स्पीड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्च के. बाद में ले लेना. That is what you know. It is determined that you are ready for the launch. All every sky is super cool, so there is no problem. See, for PSLV, for ISRO, it's child. So much crowd. No, they'll be coming. Galvi, I think 25,000 capacity is there. I was told by one scientist that it was the entire Galvi was filled when they opened it online in finance. I am staying in that Tada, one hotel is there. Because here you don't find any good hotels. There also a lot of guests. I was meeting them yesterday evening, so they said no, we have come to see the launch. You stayed here? No, yeah. It's a good hotel. Last time I stayed here only in that Lakshmi Palace when I came for the Chandrayaan thing, but it was not that good. So someone suggested me that Sri City. But what to do? I want morning I need to. Very true.
emergency always you will have. Past 2 to 3 months, there are a lot of issues with that. Our legs are running, it's touching fire. Can I have your number, sir? 9808 8808 6391. Ah, I will save. I will not. There is no need to save your name. It will be there. Very unique. Yeah, this is Raja. Yes. Nice one. Represent strong. Represent strong. Yeah. ஒரு மணிக்கல அவங்க ஃப்ரேம் கொடுத்துருவோமா? சார் நிற்க வச்சுரு, அப்படியே நிற்க வச்சு, இங்கே வந்து நிற்க வச்சு, அங்கே வந்து ஆடியோ செக் பண்ணாத சேர்ந்து இப்படியே ஆன் பண்ணி வச்சு இருக்கிற இது மேம் சாதா சதீஷ் ஆனர்ல சார் திட்டுவானுங்க. அவனுக்கு வந்து பேக் ஆகிடும், அப்படியே இப்படி போனை போட்டு சொல்லிடுவானுங்க. என்ன எப்படி நீ போவாத, போவே போவாது. ராக்கெட் பண்ணுங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரெடி ப்ரோ, கிட்ட போயிடுவா. நீங்க பேசிட்டு யாரும் இன்னொருத்தவங்க நீங்க எனக்கு இங்கே தெரியல. ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆகல ஃபோன் பண்ணுங்க. அப்பா எங்கிட்ட போட்டு வருமா இது இந்த இது அனுப்பிச்சுட்டீங்களா? அது நாங்கள் இனிமேல் தான் நடக்கும். அனுப்பிச்சுடா இல்லை ஸ்பீடு, அதாவது வந்து ஸ்பீடு இது ஓவர். श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो आज एक और देखिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर यहाँ पर आज एक जो हम सन को स्टडी करने जा रहे हैं Aditya-L1 लॉन्च की तैयारी है। Aditya-L1 जो स्पेस बेस्ड इंडियन ऑब्जर्वेटरी है, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि दिस इज अवर फर्स्ट मिशन विच वी आर सेंडिंग नियर द सन. सो जब आप बोलते हैं आदित्य-L1, आदित्य का मीनिंग मालूम है, दैट्स सन, सूर्य को आदित्य बोलते हैं. L1 क्या है?
That is very important for us to know. L1 को बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट. वैसे तो 4-5 पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4 हैं, बट L1 पॉइंट जो है इट इज अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ. और इस पॉइंट में क्या होता है कि जो भी स्पेस क्राफ्ट को हम लॉन्च करते हैं, इट विल बी ऑलवेज सीइंग द सन. उसका सन का व्यू कभी कटेगा नहीं. देयर विल बी नो एक्लिप्सिंग, देयर विल बी नो अकल्टेशन. सो यू विल बी ऑलवेज सीइंग द सन. और जब भी व्हेन वी स्टडी द सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड हैव अ कंटिन्यूअस स्टडी ऑफ द सन. अदरवाइज हमारा डेटा जो है बिखरा हुआ रहेगा. सो दिस पर्टिकुलर मिशन, देयर विल बी सेवरल पेलोड्स विच इज गोइंग, अबाउट 7 पेलोड्स आर गोइंग, जिसमें से 4 जो है, 4 of them are 4 payloads will be directly viewing the sun from the point, and the other 3 payloads are going to collect data from the point. L1 point में रह करके वो डेटा कलेक्ट करने वाले हैं. और कहाँ पर देखने वाले हैं? उन लोग जो है फोटोस्फीयर को देखेंगे, क्रोमोस्फीयर को देखेंगे, कोरोना को स्टडी करेंगे. कोरोना जो है दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, जहां से आपको फ्लेयर्स दिखाई देते हैं. और क्या स्टडी किया जाएगा? द स्टडी विल बी बेस्ड ऑन टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड द एक्टिविटीज विच आर, उसको बोलते हैं डायनामिक्स ऑफ द सन. व्हाट आर द रीजंस जो डायनामिक्स है, एंड देन व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सोलर विंड, व्हाट इज द स्पेस वेदर, because sun is a star where things are continuously changing, which we can observe from the earth also. हम लोग को उसमें सन स्पॉट्स दिखता है. सन स्पॉट एक्टिविटी इटसेल्फ ही क्यों होता है, that also has to be studied, because that sunspot is one thing which can, and it does, disturb the communication network. So sometimes you will find that हम लोग को signals नहीं आते हैं. That could be because of the fierce activity of sunspots on the sun. और कल किस व्हीकल में जाने वाला है? इसके दिस इज गोइंग टू बी सेंड थ्रू PSLV. तो PSLV में लॉन्च कर रहे हैं श्रीहरिकोटा से. टुमारो 11:50 इज द शेड्यूल्ड लॉन्च टाइम. एंड ISRO के तो लाइव यूट्यूब चैनल है, पीपल कैन वॉच. वी हैव ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड हियर, यहाँ पर 10:30 बजे कल देयर विल बी अ टॉक बाय वन ऑफ द एक्सपर्ट्स. वो बात करेंगे हमसे अबाउट आवर सन फर्स्ट एंड अबाउट द Aditya-L1 मिशन. उसके बाद में वी आर गोइंग टू लाइव स्ट्रीम करेंगे जो प्रोजेक्शन जो लॉन्च होने वाला है. 12 बजे से वी आर गोइंग टू हैव अ ओपन हाउस क्विज ऑन द टॉपिक आवर सन. सो दिस इज ओपन फॉर ऑल. आई मीन कोई भी आ सकता है, एंड देन यू कैन अटेम्प्ट टू आंसर क्वेश्चन. इफ यू आंसर यू गेट अ गिफ्ट. राइट. सो एनी स्कूल चिल्ड्रन किसी को बुलाया जा रहा है सर इसके लिए? Tomorrow, yes, we have invited some college and school students, but then it is an open thing. They can walk in and join us tomorrow. கிளம்புறோம். எப்படி கொடுக்கணும்னு யோசிக்கிறேன். விஷுவல் எப்படி கொடுக்கணும்னு யோசிக்கிறேன். லைவ் பஞ்ச் பண்ண கொடுக்க முடியாது அந்த விஷுவல். பா அந்த இதே வந்து அப்படி ரவுண்டா கீழே ரிஃப்ளெக்ஷனோட பாருங்க. Yeah, this after the Chandrayaan itself, this mission we thought of reconfiguring. Originally, when we talk about as a follow-on to AstroSat mission, which is basically for astronomical multi-wavelength satellite, there's a follow-on to that to study basically for the
Sun and some of the unanswered questions point of view. Originally was planned a low Earth mission. After the success of Chandrayaan, I think that's been reconfigured as an Aditya-L1. That means original objective remains same. An added objective of looking at the space weather and trying to forward our operational satellites point of view. I think this mission was repositioned to the L1. And it's really technically it's very, very challenging to acquire the L1 point and have an orbit around that. And over and above that, to the able to survive for the 5 years with a very, very accurate pointing requirements, this mission is concerned. And that way, I think today we have nearly 7 science instruments. With that, these will having one is technically very, very challenging to acquire the orbit, and scientifically going to be rewarding because 7 instruments will try to understand, give more data to understand more about the dynamics and phenomena what's happening in the moon. And again, operationally, it will be very purposeful because, for example, India itself is having more than 55 satellites worth more than 60,000 crores of worth. So their operationals are not uninterrupted. I think this message, whatever coming from the solar activities, will help to keep the satellites very safe and secure point of view. So that way, I think it is a multi-purpose, challenging, and yes, I think it's beyond Chandrayaan and Mangalyaan. This also has its own purpose to science as well as for the operational missions point of view. So there is a little bit confusion. People are thinking that this Aditya-L1 is going to place on the sun like a moon. So can you elaborate how different is this from Chandrayaan-3? Because it's going to be placed on Lagrangian L1 point. So like orbit near to sun. Right? Correct. Yeah, this is unlike other satellites which basically it goes around the mother planet, be it Earth, be it the moon, or be it a Mars like that. But this mission is not exactly like that. But this is the mission wherein the gravity of the both sun and Earth being coming very close, balanced. Around that point, something called the L1 Lagrangian point. There are 5 such points, but this particular point, which is nearly 15 million 1.5 million kilometers away from the Earth, 50 lakhs kilometers away from Earth, and look at the Earth always. One side of the satellite will look at always sun. So that gives an uninterrupted observation of the opportunity, not even really going towards, not very near to the sun, but it's good enough to have at least a warning of nearly 3 to 4 days in advance what's coming towards the system is concerned. One final question. What's your message to the ISRO? Yeah, the message is basically I think ISRO is now it's coming with the bang. After the COVID, it was coming up very nicely, but just COVID has made some small setback, and Chandrayaan 2 also got a setback. But now I think it's coming as a bang with Chandrayaan 3 already in a place and doing well. Now Aditya is coming, and I think I'm expecting another satellite, very, very ambitious satellite called NASA ISRO Synthetic Aperture Radar NISAR. That is basically to look at the global warning, other things, very, very minute details that will provide enough data. And beyond that, in any operational missions for communication, navigation, satellite going on, commercially also, I think it's venturing there. That way, I think it's an all-round effort. It enthusiasts the people to come in a big way. So that way, I think ISRO is now is coming with a big bang. Well, that day has arrived when ISRO is going to launch India's very ambitious project, Aditya-L1. And this is a space-based solar observatory, and Indian astronomers have worked quite a lot for several years, more than a decade, to achieve this goal. And that day is today when this satellite will be launched into space, and it's eventually going to be placed at a point called Lagrange 1, that is L1. And this is a point which is about 1.5 million kilometers from this Earth center in the direction of the sun on the sun-Earth axis. This point is where the gravitational field of the Earth and the sun are equalizing, in a sense that there's no force felt, and it's just equalized force. So let's hope in the next 4 months, when at the L1, as the satellite is placed, it's going to face the sun all the time, 24/7, and all through the year. So Indian astronomers are going to benefit from it because it's a high technology instrumentation that has gone in, and it's very up-to-date electronics. So we are also aiming at regions to observe from this point, regions very close to the sun's surface,
and the solar corona is the main sort of object of our interest. Sir, is there any challenges for? Sir, is there any difficulty or challenging situation, sir, today? I don't see at the moment because PSLV rocket is a trusted workhorse of ISRO, and it's going to be first placed in the Earth-bound orbit. Then there will be several Earth orbit raisings, after which it will be placed in a cruise orbit, and then eventually it has to land at L1, where ISRO is going to do quite a lot of maneuver in such a way that it follows, it enters that point and adopts a halo orbit and around that point. And it is going to face all the time. The solar panels are going to face the sun all the time, so that energy is available and instruments can work. Sir, I want to ask one more time. So why L1? Why particular L1 point? One thing is that near the Earth we have many more difficulties, and continuous monitoring of the sun is very essential, because L1 moves around the sun as the Earth moves around the sun. It's the same angular velocity, and therefore all the time the sun is available, and there are no eclipses caused by the moon. And obviously that point also is of interest, because we are virtually outside the magnetosphere of the Earth, so we can understand the intricacies of interplanetary medium. Thank you, sir. भारत इसरो के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्या बोलते हैं सर इसके बारे में? एकदम सही बात है, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो PSLV रॉकेट पर एक विशेष सैटेलाइट जो है लगाया गया है, जिसको कि इस पर लॉन्च किया जाना है. इसका नाम है आदित्य-L1. आदित्य यानी कि सूर्य का अध्ययन है. L1 अर्थात एक ऐसा बिंदु सूर्य और पृथ्वी के बीच में जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाता है, और वहां हम इस सैटेलाइट को रखना चाहते हैं. और ये जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये भी उसी हिसाब से सूर्य के चारों ओर घूमेगा, और लेकिन हर समय ये सूर्य को देखता रहेगा. एक किस्म से आप इसे कहिए, ये सूर्यमुखी सैटेलाइट है, और इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं जो सूर्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए हैं. उनमें से जो प्रमुख है वो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, जो कि इसका सबसे बाहरी बहुत ही गर्म वातावरण है, जिसको आमतौर से हम नहीं देख सकते हैं, और केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही हम देखा करते थे. इसमें जो सोलर कोरोना ग्राफ लगा है वो सूर्य की जो बिंब है उस चमकती डिस्क को एकदम ढक लेगा, ताकि हम जैसे ही इंटेंसिटी ड्रॉप होगा तो हम सूर्य का बाहरी वातावरण जो है कोरोना, उसका ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं. ये अत्याधुनिक उपकरण इसमें हैं, यानी कि पहले और इतनी अप टू डेट इलेक्ट्रॉनिक्स है, और जाहिर है कि भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन डेटा सेट मिलने जा रहा है. इसमें 7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करने के लिहाज से हैं. सर, इसका लाइफ टाइम क्या होगा और इससे क्या क्या प्रॉफिट होगा? साथ में साथ कोई ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन है सर आज हमको? देखिए, एक तो भारतीय वैज्ञानिकों के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जहाँ तक चैलेंज की बात है तो जब L1 पॉइंट पर जाना है तो वो अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि इतनी दूर है, ये लगभग 4 गुना है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी से. दूसरी बात यह है कि सब इंस्ट्रूमेंट्स को फंक्शन करना है, और अगर बेनिफिट का लिहाज देखें तो एक तो साइंटिफिक बेनिफिट है, और उसको हम पैसों में नहीं आंक सकते हैं, लेकिन ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं इनके प्रति जनता की रुचि बढ़ती है, और जनता समझती है कि हाँ, हमारे भारतीय वैज्ञानिक कुछ कर रहे हैं. इसके अलावा एक यंग जनरेशन के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, तो उसके तो मूल्य को हम नहीं आंक सकते हैं. वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है जब भी कोई ऐसी लॉन्च होती है, या ऐसा कोई प्रोग्राम इसरो की तरफ से या भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से ये सामने आता है.
रोवर ने पृथ्वी से 3,80,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर विचरण कर भारत की अमिट छाप छोड़ दी है। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सकुशल उतरने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। यह सब संभव हो पाया है इसरो के कुशल मार्गदर्शन और वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब इसरो तेजोमय सूर्य के अध्ययन के प्रयोजन से आदित्य-L1 नामक अंतरिक्ष यान को आज 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 11:50 पर PSLV C-57 रॉकेट द्वारा प्रमोचित करेगा। आइए चलें सूर्य की ओर और विज्ञान के कुछ और रहस्यों से पर्दा उठाने और वैज्ञानिक तकनीक का प्रदर्शन करने। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस मिशन में, जिसका नाम है PSLV C-57 आदित्य-L1 मिशन। Namaste viewers. The Indian Space Research Organization is gearing for its rendezvous with the sun. To take you along on the live telecast of this momentous event today, I am Madhuri, giving the commentary in English. With me is my co-commentator, Shivikas Swarnkar, who will be giving the commentary in Hindi. We are about to script yet another chapter in the glorious space research history of India. Today, the workhorse rocket PSLV C-57 will carry Aditya-L1, the solar observatory of India, to be placed at a vantage point from where it will be able to continuously observe the sun and while being in the visibility of Earth-based ground stations. 10 days ago, India became the first country in the world to safely land a spacecraft in the South Polar regions on the moon. I'm sure many of you were the eager and proud spectators of the Chandrayaan-3 landing that was being telecast from ISRO, situated in Bengaluru. Roger. We bring to you an integration film for the PSLV C-57 that took place in Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota. अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है प्रथम कोर चरण S-139 बूस्टर का नोजल एंड सेगमेंट। इस प्रथम चरण के साथ ये शुरुआत होती है और यह मिडिल सेगमेंट को इसके ऊपर संयोजित किया जा रहा है। ऐसे 3 मिडिल सेगमेंट इसके ऊपर संयोजित किए जाएंगे और अंत में हेड एंड सेगमेंट सबसे ऊपर की ओर संयोजित किया जाएगा और इस तरह तैयार होता है PSLV का प्रथम चरण कोर बूस्टर S-139। इसमें 139 टन का प्रणोदक होता है और यह इग्नाइटर है जो इसे प्रज्वलित करता है। इस मिशन पे यह है PSLV C-57 एक्सेल मिशन। तो इसमें हैं 6 स्ट्रेपॉन बूस्टर्स, हर एक में 12 टन के नोदक भरे जाते हैं। यह सब ठोस नोदक पर आधारित हैं। यह SI-TVC टैंक को उठाकर इसके साथ संयोजित किया जा रहा है। इंटरस्टेज आप देख रहे हैं, इसमें रिट्रो मोटर्स लगे हुए हैं पृथक्करण के लिए। और यह है द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन लगा हुआ है। And here is the second stage of the PSLV rocket, prepared in the subsystem preparation facility and brought to the vehicle assembly building of the second launch pad to be integrated on the first stage of the rocket. Here you can see the third stage PS3 and PSO being moduled Roger. and placed inside the respective shroud and then handled together Roger. to be moved to the vehicle assembly building. यह नज़ारा आप देख रहे हैं व्हीकल असेंबली बिल्डिंग का, जहां पर पूरे व्हीकल को असेंबल किया जाता है। These are the visuals from the clean room of the spacecraft preparation facility. This is the Aditya-L1 spacecraft being prepared and ensconced into a protective container
where the environment is controlled and the temperature is controlled, the cleanliness is controlled. At the vehicle assembly building, again there is a clean room provision to safely integrate it to the rocket, and then the heat shield halves are closed. Now the vehicle is fully ready to be moved to the launch pad, which is about 900 meters away. This is PSLV C-57 standing majestically. अभी अभी आपने देखा PSLV C-57 का इंटीग्रेशन वीडियो। यह पूरी तरह तैयार और कुछ अंतिम गतिविधियां जारी हैं, अंतिम जांच जारी हैं प्रमोशन से पहले की। We are bringing this telecast to you live from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota. The launch will take place today, the 2nd of September 2023 at 11:50 hours Indian time from the second launch pad. All stations switch over to channel 2 at T-. The PSLV C-57 in its XL version will carry Aditya-L1 spacecraft having a mass of 1,480 kilograms. The mission intends to place the spacecraft in 235 by 19,500 kilometers orbit with an inclination of 19.2 degrees. The total mission duration will be 3,799 seconds or 63 minutes 19 seconds. Apart from Doordarshan, you can watch the live telecast on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. अब हम प्रमोशन से 22 मिनट की दूरी पर हैं। आदित्य-L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। इस मिशन से आदित्य-L1 नामक अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली में लैग्रेंज 1 पॉइंट के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस तरह L1 पर रखे गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी आच्छादन या ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है। यह अंतरिक्ष यान विद्युत चुंबकीय और कण चुंबकीय क्षेत्र सूचकांकों का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के सबसे बाहरी परत, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, इनका निरीक्षण करने के लिए इसमें 7 निदभार लगे हुए हैं। इनमें से 4 निदभार सीधे सूर्य की गतिकी का अध्ययन करेंगे तथा अन्य 3 निदभार L1 बिंदु पर कणों और क्षेत्रों का यथास्थिति अध्ययन करेंगे। इस तरह आदित्य-L1 उपग्रह के निदभार कोरोनल तापन, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं और अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता को समझने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। अब आपके सामने प्रस्तुत है आदित्य-L1 कर्टेन रेजर। The sun and how it impacts the heliosphere. The sun, which is the center of our solar system and has always fascinated humans, is a ball of hot gases formed by the nuclear fusion process. The visible outer surface of the sun is known as the photosphere, followed by the chromosphere and then the corona. After initially dropping through the chromosphere, the sun's temperature abruptly rises in the corona, reaching extremely high values of 1 to 3 million Kelvin. The Aditya-L1 mission has 7 scientific payloads to conduct a comprehensive study of the sun. The Visible Emission Line Coronagraph, VELC, investigates the solar corona and the dynamics of coronal mass ejections. The Solar Ultraviolet Imaging Telescope, SOOT payload, scans the solar disk in near ultraviolet light and detects fluctuations in solar irradiance.
The Aditya Solar Wind Particle Experiment Aspects and Plasma Analyzer Package for Aditya Papa payloads investigate the solar wind and energetic ions, as well as their energy distributions. The Solar Low Energy X-ray Spectrometer, SOLEXIS, and the High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer, HELIOS, analyze X-ray flares from the Sun over a wide energy range. The magnetometer payload is designed to measure the interplanetary magnetic field at the L1 point. Aditya-L1 is equipped to take in situ measurements of charged particles and fields at L1 and is dedicated to studying the Sun across several energy bands. The Lagrange point L1 is located around 1.5 million kilometers from the Earth between the Sun and the Earth. 18 minutes and counting. These observations are best made from a vantage point that provides a continuous view of the Sun. All payloads are designed in close coordination with ISRO centers and national laboratories like as IIA, IUCAA and PRL. With this mission, ISRO will once again demonstrate its position in space exploration. We are 17 minutes 23 seconds from the launch time.